मोनी अग्रवाल ने डिज़ाइन करी है और इसका नाम है मीरावली और राजस्थान से इंस्पायर्ड है। एज यू कैन सी काफ़ी पोल्की का काम है, अनकट डायमंड है, एमरल्ड्स हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग। और मेरा पर्सनल फेवरेट भी अनकट डायमंड्स और जो एक एंटीक ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, इज़ माई फेवरेट। सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। जी एक्चुअली इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, उनकी फैमिली में कुछ आई थिंक शी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर, सो इसलिए वो आज नहीं आ पाई हैं एंड सो आई एम हियर फॉर हर। मुझे कुछ मौक़ों पर जब मतलब या तो कोई त्यौहार होता है या इट्स अ वेडिंग और समथिंग, वी ऑल वांट टू ड्रेस अप, वी ऑल इंडियंस, सो ऑफ कोर्स ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उन मौक़ों पर मैं ज़रूर पहनती हूँ, लेकिन अदरवाइज नॉट सो मच, नो। स्टार्ट शूटिंग फॉर आवर फिल्म। 3 फिल्में हैं जो शायद एक के बाद एक ही जब शुरू होंगी तो वी विल शूटिंग। सो आपको बहुत जल्द उनके बारे में पता चलेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स हैं एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा चित्रा, हमने हमेशा आपको देखा है फैशन शो पे, रैंप पे, लेकिन हमने हमेशा आपके हेयर को बंधे हुए देखा है। आज सडनली आपके खुले हेयर काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू। इसके बारे में कुछ नहीं, एक्चुअली टाइम थोड़ा कम था और मेरी जो मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट हैं महक, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट बाल कर देते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो इट वाज अ प्रीटी सिंपल डिसीजन, बट थैंक यू। ओके, थैंक यू। इधर की लाइट के लिए माँ बहन कर रहे हो, तो कम ज़्यादा कर रहा खेल रहा हो। थैंक यू। चला तो बाहर जाने दो। ये वॉकिंग चलो चलो हो गया, चलो ये राइट yes this one you're right Can you repeat your question, please? Sorry. I'm wearing clothes by Ashima and Leena, and of course the jewelry is by Gitanjali Group. It's a part of the Nizam collection. Of course, Mr. Choksi is standing right next to me, and for me, I think wearing Gitanjali jewelry and having the man behind the show is a huge honor. And this definitely is a collection that symbolizes a lot of royalty. It symbolizes a lot of class. It makes you feel far more confident, and it makes you feel it takes you away to a little bit of an old world, and that's why the Nizam collection. And everything you see is done intentionally and only keeping these beautiful pieces of jewelry in mind. Well, for me, I've just been very fortunate that I've been the brand ambassador for Gitanjali for so many years, and they have such a wide variety. So anything I want. So if I want to wear something really simple, it's there for me. If I want to wear something really heavy and very, if it has to be something that needs to look like celebrated jewelry, I know that I can have it. But I think I'll know whether I'm a jewelry person or not only after. I just hope our relationship never gets over, but once it does. But I think the most important person to answer your question, I don't think that there's any woman out there who's not a jewelry person, and we have weeks and people dedicated to jewelry, and whatever the occasion may be, we're always ready to wear jewelry, small or big. First of all, Neha is our jeweler for our crown for many years. It's inception of branding, and I think that she's going to be forever. The jewelry, what we showcased today was a bridal collection by the leading brands of the world. In fact, from Nakshatra, Ashmi, Jili, the Damas and Nizam. The Nizam, she's wearing Nizam, a beautiful piece crafted by Queenie Dodi for Nizam. This is for the uncut diamond. What India is really, it's so much of handloom work goes after this, and it is made in Jaipur. And it's really catching up the world very well. Thank you. Well, I have something fun coming out in September. It's called Ikkis Topo Ki Salami, and it'll be nice. I've missed myself on the silver screen for a while, so I'm just glad that it's all happening now. I also have Ungli that's coming out in November.
And I have a comedy film called Santa Banta, which should be coming out sometime soon as well. So yeah, it's each one is different from the other, and I like keeping it's very, very different. So yeah, I'm just enjoying myself. That's what I'm doing. Thank you very much. Thank you. Thank you.